morning to all students. Students, in my previous lecture, we have studied pro forma of receipt and payment account. Now, receipt and payment account is the first account which is prepared by not for profit concern. Now, in today's lecture, we are going to study second account which is prepared by not for profit concern, and that account is called income and expenditure account. Now, first of all, we are going to study what is income and expenditure account. Now, basically, all not for profit concerns prepare income and expenditure account. They do not prepare profit and loss account. Now, generally, profit and loss account is prepared by trading concerns like partnership firm, joint stock company for finding out net profit and net losses of the business. But not for profit concerns do not prepare profit and loss account, because their main object is to provide services to its member or to the needy people in the society, and that's why they do not prepare profit and loss account. Now, income and expenditure account is a nominal account. Now, you know the rule of nominal account. Rule of nominal account is debit expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay, so that rule of nominal account we have to follow while preparing income and expenditure account. Income and expenditure account prepare करने के लिए हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है. Now, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? In debit side of nominal account, we record in rule of nominal account is in debit side we record all expenses and losses. मतलब जो भी एक्सपेंस है बिजनेस के या जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वो हमें डेबिट में शो करने हैं. ओके, और जो भी इनकम और गेन है, जो भी उसके फायदे हैं, वो हमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहाँ रिकॉर्ड करेगी? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगी. ओके, सो दैट रूल वी हैव टू फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग income and expenditure account. So, all revenue expenses and losses of current year, this word is very important, are debited. Now, in debit side of income and expenditure account, all revenue expenses and losses of current year के जो भी revenue expenses है, जो भी losses है, वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने हैं. ओके, फॉर एग्जांपल सैलरीज पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कन्वीनियंस पेड, ऑडिट चार्जेस पेड, दीज आर दी रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. सो दीज रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर ओनली, करंट ईयर के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे. ओके, वेयर एज रेवेन्यू इनकम्स एंड गेन्स ऑफ करंट ईयर आर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नाउ, करंट ईयर के जितने सारे रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू गेन है, वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो करने हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करने हैं. ओके, so keep in mind all revenue expenses of losses, all revenue expenses and losses of current year only are recorded in debit side of income and expenditure account, whereas all revenue incomes and gains of current year are credited to income and expenditure account. Okay, now revenue expenses of last year means previous year, पिछला साल, as well as following year means next year, are not recorded in income and expenditure account, whereas all revenue incomes and receipt of last year means previous year, पिछला साल, and following year means next year, are not recorded in income and expenditure account.
Now this point is very important point. Now in income and expenditure account we cannot record revenue receipts, revenue payments or revenue expenditure of previous year and following year. पिछले साल का अगर कोई रेवेन्यू रिसिप्ट पेमेंट होगा या नेक्स्ट ईयर का मतलब फॉलोइंग ईयर का अगर कोई रेवेन्यू पेमेंट होगा तो इस अकाउंट में हमें वो शो नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है. ओके. सिमिलरली रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर as well as revenue receipts of following year or next year are not recorded in income and expenditure account. Now in receipt and payment account we record all revenue receipts as well as all revenue payments which are related with previous year, current year or following year. receipt and payment account के अंदर हम revenue receipt और revenue payment दोनों चाहे पिछले साल के हो, चाहे करंट ईयर के हो या चाहे नेक्स्ट ईयर के हो, आगे आने वाले साल के हो, फॉलोइंग ईयर के हो, वो हम तीनों की तीनों रिकॉर्ड करते थे. ओके. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड, स्पेसिफिकली वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स which are related with current year only. करंट ईयर के जुड़े हुए जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, जितने भी रेवेन्यू इनकम है, जितने भी रेवेन्यू पेमेंट है, वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने हैं. ओके. सो नेक्स्ट इज दिस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आइदर शो यू सरप्लस और अ deficit. Now basically income and expenditure account is prepared to find out surplus or deficits of not for profit concern. Now profit and loss account, we take the example of profit and loss account. Profit and loss account is prepared to find out either net profit or net losses of a business. But not for profit concern we prepare income and expenditure account for finding out either surplus or deficit of not for profit concern. Now what is surplus? If income of not for profit concern is more than its expenditure, then we will get surplus. अगर not for profit concern का खर्चा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा तो हमें सरप्लस मिलेगा. And if expenditure of not for profit concern is more than its income, then we will get deficit. अगर not for profit concern का एक्सपेंडिचर उसके इनकम से ज्यादा है तो हमें डेफिसिट मिलेगा. ओके. सो टू फाइंड आउट सरप्लस और अ डेफिसिट we prepare income and expenditure account. Now whether there is surplus or whether there is deficit, we have to transfer it to the liability side of the balance sheet. Okay. So चाहे surplus हो चाहे deficit हो वो हमें balance sheet के liability side में transfer करना होगा. Okay. Now if there is surplus, okay, if there is a surplus then it will be added to the capital fund in the liability side, and if there is a deficit it will be deducted from capital fund in the liability side. Now this point is also very important. If there is a surplus then that surplus will be added to the capital fund which we record in liability side. Okay. Surplus means positive balance, so that positive balance of surplus we will add in capital fund in liability side. Now if there is a deficit, deficit is a negative balance, minus balance, so it will be deducted from capital fund in liability side. Okay. So it is very clear to you that income and expenditure account is basically prepared to find out surplus or deficit of not for profit concern. Okay. So here we are going to see specimen of income and
expenditure account, okay, or pro forma of income and expenditure account. Now income and expenditure account is also divided into two parts. Now this account is based on rule of nominal account. So in debit side of this account we will record all revenue, expenses and losses ड्यूरिंग दी करंट ईयर के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है या लॉसेस है वो हमें एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करने हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक्सपेंडिचर साइड वी विल राइट एक्सपेंसेस which are revenue expenses and which are paid during the current year only. First is salaries paid for current year. करंट ईयर का जो भी सैलरी पेड किया है वो आपको एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है. नाउ हियर यू कैन नॉट राइट सैलरी, यू कैन नॉट राइट और यू कैन नॉट मेंशन सैलरी पेड फॉर प्रीवियस ईयर और सैलरी पेड फॉर फॉलोइंग ईयर. ओके, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी राइट all three types of expenses which are related with previous year, which are related with current year, which are related with following year. But here in income and expenditure account we have to show, we have to write basically expenses or revenue expenses of current year only. Now next is printing and stationery, rent, interest, conveyance, rates and taxes, insurance premium, audit fees, office expenses, telephone or mobile expenses, medicines. Now these are revenue or recurring expenses of not for profit concern which we have shown on expenditure side of income and expenditure account. Okay, now next expenditure is we have to, if there is sports material, now we have to write the formula of sports material. To sports material consumed during the year. Now basically sports materials are purchased by sports organization. Now if there is not for profit concern is sports organization, अगर कोई not for profit concern sports association है या sports organization है, so it will purchase sports material. So during the year उसने कितने स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम किया है, कंज्यूम मीन्स इस्तेमाल किया है, उसका रिकॉर्ड भी हमें एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में क्या करना है, शो करना है. सो टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को कितना कंज्यूम किया, कितना यूज किया. सो हियर वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ sports material consumed during the year. First of all we will write opening stock of sports material. Now opening stock of sports material means closing stock of sports material of previous year will become opening stock of sports material of current year. पिछले साल का जो भी closing stock होगा वो current year का opening stock होगा. Okay, that will be called as a opening stock of current year. So first of all you have to write opening stock of sports material that you will get from previous year. Okay, in that you will add purchases of sports material. Now during the year if we have purchased sports material, अगर हमने करंट ईयर में कोई स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेस किया है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, लेस closing stock of sports material. Now if any closing stock is left at the end of the year, that closing stock we will deduct or we will minus from this formula. Okay, so how we will get sports material consumed during the year? First of all we will write opening stock of sports material. Okay, in that we will add sports material purchased during the year, and from that we will minus or we will less closing stock of sports material. Okay, and final value we will record in outer column. Thereafter repairs and maintenance, electricity charges, newspaper and periodicals, sundry expenses.
So these are revenue expenses of not for profit concern which we have recorded in expenditure side. Next is loss on sale of asset. Now if there is loss on sale of any asset like sale of furniture, we have to show in एक्सपेंडिचर साइड. अगर फर्नीचर बेच के या कोई फिक्स एसेट को बेच के हमें लॉस हुआ है तो हमें वो एक्सपेंडिचर साइड में शो करना है. देन नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट. ओके, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, सो वी विल रिकॉर्ड इन एक्सपेंडिचर साइड. नाउ टू सरप्लस. नाउ व्हेन वी विल गेट सरप्लस? व्हेन टोटल ऑफ इनकम साइड is greater than total of expenditure side. Not for profit concern के जब इनकम की टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तब हमें सरप्लस मिलेगा. सो व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस मीन्स excess of income over the expenditure. Now when we will close income and expenditure account, we will get either surplus or deficit. Okay. Now after studying expenditure side of income and expenditure account, now we are going to study income side of income and expenditure account. Now all revenue income, all revenue gains during the year, during the current year are recorded in income side of income and expenditure account. Here also we have to record all incomes of all revenue incomes, all revenue receipt of current year only, not for previous year or not for last year and not for following or next year. Okay, so first of all we have to record by subscription received during the year. Now if subscription is received during the current year from the member, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के मेंबर से करंट ईयर में जो भी सब्सक्रिप्शन मिलता है इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम साइड. नाउ सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ओके, एंड दैट्स व्हाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज रिकॉर्डेड इन इनकम साइड. नाउ इन from subscription received during the current year, we have to deduct or we have to less subscription received for last year. Now if subscription received for previous year or last year is given in the question, then we have to deduct subscription of previous year from subscription received from the current year. अगर आपको क्वेश्चन में या सब्सक्रिप्शन के अंदर करंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ है, मिला है, उसके अंदर अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन या लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है तो हमें वो क्या करना है? लेस करना है, माइनस करना है. व्हाई? बिकॉज इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, सॉरी, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन, वी रिकॉर्ड ऑल इनकम ऑफ करंट ईयर ऑनली. पिछले साल का हम सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे? दिया, अगर दिया है तो लेस करेंगे. सिमिलरली वी विल डिडक्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर मींस फॉलोइंग ईयर. ओके, सो इफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ फॉलोइंग ईयर और नेक्स्ट ईयर इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, सो दैट सब्सक्रिप्शन वी विल डिडक्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दी करंट ईयर. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग ईयर का या नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, वो भी सब्सक्रिप्शन हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से क्या करेंगे? लेस करेंगे. सो हियर वी हैव टू कीप इन माइंड दैट subscription received during the current year, in subscription received during the current year we have to minus, we have to deduct two subscription. First is subscription received for last year. पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिल रहा है वो हम लेस करेंगे. Similarly, subscription received for following year or
next year we have to deduct from subscription of current year, because both subscription are not income of current year. Whether subscription is received during the current year for previous year, or whether it is received for following year, it is not the income of current year. ये हमारे current year का income नहीं है, and that's why पिछले साल से मिला हुआ सब्सक्रिप्शन या नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, आगे आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन आपको अगर दिया है तो आप क्या करोगे, दोनों लेस करोगे करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन से. ओके, नाउ इन दैट वी हैव टू ऐड in subscription of current year or subscription received during the current year, we have to add subscription received during the last year for the current year. Now if subscription received in last year for the current year, अगर किसी मेंबर ने पिछले साल सब्सक्रिप्शन पे किया है करंट ईयर के लिए, तो वो हमें क्या करना है, ऐड करना है, बिकॉज दैट इज द इनकम ऑफ करंट ईयर. वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. इफ एनी मेंबर हैज पेड सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल उसने सब्सक्रिप्शन पे किया था, बट इट इज पेड फॉर करंट ईयर, सो इट विल बिकम द इनकम ऑफ करंट ईयर, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी एडेड टू द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दी करंट ईयर, क्योंकि वो करंट ईयर का इनकम होगा, इसके लिए हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे. सिमिलरली वी हैव टू ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर. नाउ कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे नहीं करते हैं, सो दैट सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर. So outstanding subscription of current year is the income of current year, वो current year का income है. Okay, and that's why outstanding subscription for current year is added to the subscription received during the year. Okay, so once again we will try to understand the point related to subscription. First of all, we will write subscription received during the year, ड्यूरिंग दी करंट ईयर. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारे करंट ईयर का इनकम है, तो वो आप इनकम साइड में रिकॉर्ड करोगे. ओके, देयर आफ्टर वी विल डिडक्ट और वी विल लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर. ओके, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिला है, मेंबर ने पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन बाकी था वो इस साल पेड किया, तो वो हम लेस करेंगे. क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का इनकम है. ओके, एंड हियर वी रिकॉर्ड द इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली. सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर वी विल डिडक्ट, वी विल लेस. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. अगर कोई मेंबर नेक्स्ट ईयर का या फॉलोइंग ईयर का अगले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल पेड करता है, सो ये नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा, करंट ईयर का इनकम नहीं है. Okay, and that's why we will less subscription received for next year. Okay, now in that we will add subscription received during last year for current year. अगर किसी मेंबर ने पिछले साल सब्सक्रिप्शन पे किया है, कौन से ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए पे किया है, एडवांस में पे किया था सब्सक्रिप्शन पिछले साल में किसी मेंबर ने, तो वो इस साल का इनकम होगा. That's why we have to add it. Okay, and next is add outstanding subscription for current year. Outstanding means मिलना बाकी. अगर किसी मेंबर का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, तो वो हम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू solve the formula of subscription. Now subscription is very important thing in your topic of not for profit concern. Now जिसे सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट समझ में आएगा, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकता है. ओके, सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट और ट्राई टू अंडरस्टैंड all things which are related with
subscription. Okay, now this point of subscription we will solve in detail at the time of solving our question. Now next is, thereafter we have to write all revenue receipts which we have got during the current year. current year के जो भी revenue income है, revenue gain है, वो हमें income side में लिखने हैं. For example, rent received, interest received. So these are revenue income, these are recurring income of not for profit concern, and that's why these are recorded in income side. Next income is dividend received, government grant received, okay, ground rent received. अगर not for profit concern ने अपना ground भाड़े पे यूज करने के लिए दिया है तो उसका रेंट मिला तो वो उसका वो इनकम होगा. So rent received of ground will be shown in income side. Next is sundry receipts, then entrance fees which are revenue in nature, entrance receipt which are revenue in nature, admission fees which are revenue in nature. Now whether there are entrance fees, whether there are entrance receipt, whether there are admission fees having revenue in nature, we have to write in income side. Next is general donation or donation in general. Now if donation is received for general purpose, then it will be treated as a income. But if donation is received for special purpose, then it will be treated as a capital income, and we will show it in liability side of the balance sheet. Okay. Next is profit on sale of asset. Now if we have got profit on sale of asset, हमने कोई अगर हमारी फिक्स असेट बेची और उसे बेचने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है, so that we will show in income side. Okay, for example, profit on sale of furniture, profit on sale of machinery. So these profit on sale of asset we will record in income side. Now next is deficit. Now all of you know that when we will get a deficit, when expenditure side of not for profit concern is greater than income side. not for profit concern के अगर खर्चे expenditure income से ज्यादा है तो हमें negative balance मिलेगा. Okay, that will be called as a deficit. So basically income and expenditure account is prepared to find out surplus or a deficit of not for profit concern. Okay, now if there is a surplus, then it will be added to the liability side of the balance sheet, because it is surplus is a positive balance. And if there is a deficit, deficit is a negative balance minus balance. Okay, so it will be deducted or it will be minus from capital fund in the liability side of the balance sheet. Okay, now this pro forma of income and expenditure account is very important, because in examination or in question of account of not for profit concern, they will give you only receipt and payment account of current year, and below that you will get additional information or adjustment, and on the basis of receipt and payment account and adjustment or additional information we have to prepare income and expenditure account and बैलेंस शीट. आपको क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का प्रोफार्मा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए जाएगी, और उस बेसिस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ओके, सो दैट इज व्हाई this pro forma of income and expenditure is very important. Okay, so in today's lecture we have studied pro forma of income and expenditure account. Now in next lecture we are going to study pro forma of balance sheet of not for profit concern. Once again, thank you
Thank you all of you for watching my video.